Hi, a very good afternoon to all of you. Okay, so since 1st January, जब से application form start हुआ है, right? It's been like almost 1 month, and registration is about to close as we speak, right? The last date, if I'm not wrong, is 1st of February, 11:59 or something, late in the night. ठीक है? However, as a suggestion to all the students, ठीक है, it's a request that all of you try to wrap up your registration as soon as possible. And अगर आपको कोई deadline रखनी भी है तो keep it 31st January, right? Because last moment there can be technical glitch, there can be any issue जो शायद आपको समझ ना आए या आपके कंट्रोल में ना हो, और there can be scenarios जिसके लिए आपको back and forth करना पड़े एनटीए के साथ, reconfirmation and all. So to avoid any such situation, it is better you complete your registration as soon as possible. Let's keep 31st January as our own deadline rather than 1st of February. एक और बात कि हाँ, देयर ऑफ कोर्स एवरी ईयर एक अजम्पशन रहती है कि डेडलाइन विल एक्सटेंड, करेक्ट, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. हमें अपनी रजिस्ट्रेशन जो एक फर्स्ट इनिशियल टाइमलाइन है उसमें कंप्लीट करनी है, एंड फॉर दैट विल कीप अस फॉर आवरसेल्फ अ डेडलाइन ऑफ 31st जनवरी. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है. सबसे मेजर क्वेरी जो आप सबकी है कि विच आर द टॉप इंस्टीट्यूशन, विच यूनिवर्सिटीज शुड आई टारगेट. ठीक है. सो लेट मी टेल यू, until and unless this dynamic list of university is closed, ठीक है, उससे पहले इट इज नॉट राइट टू टेल यू ऑल द यूनिवर्सिटी, बिकॉज क्या पता कुछ यूनिवर्सिटीज अभी ऐड ही ना हुई हो, कुछ यूनिवर्सिटीज लास्ट में ऐड हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, one of the top options जो आप जा सकते हो, which is IGDR, which was added last week itself. ठीक है. So universities are being added. So let's discuss either once the registration closes on 1st of Feb, or the so-called dynamic list, I feel most likely will be done by that. ठीक है. जब आपकी application close हो गई तो I don't see any reason for them to add the universities, but that's not a hard and fast rule. Universities add हो सकती हैं registration closure के बाद भी. So for ourselves, we'll try to keep a deadline of 31st March. उस time पे we'll discuss all the top options that you can target from CUET PG. उससे पहले there is no sense in telling you क्या पता वो यूनिवर्सिटीज में ऐड हो या ना हो. So that's the pure rational reason for that. ठीक है. Now let's come to the two universities, two institutions जो add हुए हैं. ठीक है. One of them was added actually on Friday or Saturday. So let me just go to that first. ठीक है. So one of the options that is added now is South Asian University, Delhi, because काफी बच्चे साउ में interested रहते हैं, because it is at the end of the day an international university in context of South Asia, right? So Sau is one option that is now officially added to the list. Okay, for all the students who are wanting to stay in Delhi or who wants to come to Delhi and study for their masters. ठीक है. And it's not about that, but overall also it's a good option that you can target, right? Now, as we speak, today itself, there was one more university which was added, and that's DTU, right? Delhi Technological University is now officially part of CUET 2025. Till yesterday, DTU was nowhere to be seen on the portal, on the website, but now it's officially added. Of course, क्योंकि जो university last year थी, it is assumed एंड इट इज बिलीव कि वो इस साल भी होंगी, बट अनटिल अनलेस वो इस ऑफिशियल लिस्ट में नहीं आती, वी ऑल ऑफ अस आर काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. तभी देयर वाज क्वेश्चनिंग कि आईजीडीआर पार्ट होगा कि नहीं होगा, उससे पहले गोखले पार्ट होगा कि नहीं होगा. उसी तरीके से बहुत से बच्चे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डीटीयू एज वेल. सो नाउ officially it is confirmed that for 2025 CUET PG, DTU is also officially part of CUET PG 2025. ठीक है. आप अपने कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो मैंने आपको बताया है कि वो डायरेक्ट टू द टेस्ट पेपर COQP10. तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपका MA इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो देयर. बाकी ऑफ कोर्स आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी बिकॉज आई वांट टू कीप दैट असाइड फॉर अ सेपरेट सेशन. ठीक है. बट ओवरऑल काफी बेसिक एलिजिबिलिटी है जो उन्होंने पूछी है.
So, but still, we'll discuss in a separate session. एंड लेट्स कम बैक टू द लिस्ट। तो ठीक है, ये दो यूनिवर्सिटी थी। फर्स्ट ऑफ कोर्स अभी के भी सामने है, सो इट्स डीटीयू, ऑफिशियली एडेड नाउ, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एंड योर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली इज ऑल्सो नाउ ऑफिशियली पार्ट ऑफ CUT PG 2025। ठीक है, one second, okay. In the last session, we did discuss about IGDR, of course. So every Monday we try to make sure कि आपके पास एक updated list हो, जिसमें जो भी यूनिवर्सिटीज ऐड होनी है वो हो चुकी हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट विल टेक ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे, एंड सी की और कौन सी न्यू एंट्री है टू द लिस्ट, राइट? So we did discuss about CDS Kerala, and we did discuss about IGDR Bombay. Both of these are pretty good options. ठीक है, no doubt about that, and they are also now part of CUD 2025. ठीक है, apart from that, many of the students have a concern कि private universities अगर है तो उनमें कौन से options आप देते हो, ले सकते हो, कौन से open है। So in that regard, we will have a separate session कि अगर आप एक गवर्नमेंट ड्रिवन यूनिवर्सिटी नहीं लेते, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, कोई भी हो, अगर आप उनके नहीं जाते हो, आप प्राइवेट में जाना चाहते हो, सो विच आर फेयरली बेटर ऑप्शंस दैट यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको टेरी दिल्ली का भी बता दिया था कि दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ CUT। नाउ द रीजन आई हाईलाइटेड अबाउट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी वाज बिकॉज लास्ट ईयर दे हैड देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। ठीक है, मतलब दे हैड देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम ऑल टुगेदर, right? So this year they are coming via CUT, and officially it remains to be seen kya it will only consider CUT as entry to their course, or they will have another their own separate exam for other students as well। ठीक है, so that remains to be seen, क्योंकि last year they had their own entrance exam, इस साल they are coming via CUT। So most likely अगर ज्यादा पेन एफर्ट नहीं लेना यूनिवर्सिटी को, से they will simply accept your CUT का score, and अगर if they want to have another set of strategies, so of course they might have their own entrance exam, because considering South Asian University has students from South Asia, which means international students, so that remains to be seen कि how will that part work out, कि how international students will appear for CUT and all, so that remains to be seen। बट अभी ऑफिशियली उनके वेबसाइट पे उस प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं है, बट एज यू कैन सी, आप जो एग्जाम देने वाले हैं CUT का, दैट विल बी एक्सेप्टेड एट साउथ। ठीक है, and of course I have already discussed about DTU in detail, we'll discuss in some other session। ठीक है, and apart from that you already have all the central university being part of CUT। I haven't yet counted it, but last year there were around 60-70 plus university। ठीक है, and वो लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी with every passing day। and even last year also जब application form भी close हो गया था, उसके बाद भी कुछ universities थी, they were kind of being added to the list। I don't know how did that work out, but still they did accept the CUT का score। ठीक है, so that is the reason the list is dynamic, चीजें ऐड होती रहेंगी इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। अगर हम अभी देखें तो अराउंड दे हैव गुड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी, लाइक यू हैव द ऑप्शंस बाइफरकेटेड आपके लिए कि कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी स्टेट सेंट्रल हैं, कौन सी प्राइवेट है, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। सो अभी आप अपना फोकस एग्जाम पे रख सकते हो, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन हैव योर ओन लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आप टारगेट कर सकते हो। टेस्ट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन ऑफ कोर्स। ठीक है, these are the deemed universities। Yep, that's these are the actually two options that I wanted to discuss, SAU and DTU। ठीक है, so that's it from this session, and in case if you have any query related to these, just feel free to drop a WhatsApp or call, and I'll try to help you and guide you in that regard। And lastly, again, a request, humble request, कि make sure आप अपनी registration, अपनी application complete कर लो for yourself। Keep a deadline of 31st, even though the last date is 1st of February, if I'm not wrong। Yeah, the last date is 1st of February, 11:50 p.m. Let's not drag it to that date। ठीक है, कोशिश करो 31st जनवरी तक आप रैप अप कर लो।
And let's forget about this date as well. Let's forget about first as well. Okay. So make sure you complete your registration. And of course, best of luck for your upcoming exam on this weekend, IIT JAM. And uske baad, of course, GATE. And uske baad, all focus for CUET PG 2025. Okay. Thank you so much, guys. Again, koi query ho, so just feel free to connect. Okay. Thank you so much.